Good morning to all of you. I welcome you to this RDBMS class. If I'm audible, loud and clear, give me a raised hand, all of you. All right, you can lower your hands now. Thank you. So in today's class, we are going to discuss about concurrency control, security, and recovery. We may not be able to finish all these topics, but we will make a beginning today, right? So, Rajan, just lower your hand, please. Rajan Singh, lower your hand. So if you can see my screen, just give me a raised hand. My screen is visible to you, all of you once again. Yeah. These are the preliminaries, through which I can be sure that you are able to hear me and you can see my screen. So in our last class, we discussed about schedules and about locks. And we discussed about detecting serializability. So let me begin today's session by asking you, what is serializability? You can raise your hands to answer this question. What is serializability? Abhijit, you can answer. So when multiple transactions are running concurrently, then there is Abhijit, you can answer, but you are not audible. so when multiple transactions are running concurrently, Yeah. then there is a possibility that database may be left in an inconsistent state. So, Okay, Abhijit, that is or not serial. That's not serializability. That also, you're telling something else. Okay. sir, Wait. Yes. Yes, Bharat, you can answer this question. What is serializability? Sir, when there is a number of transaction and they are not in serial way, but they act like in serial way. Okay. Better answer. Good. So all of you can note serializability is the phenomena in which a non-serial schedule behaves like a serial schedule. See, a serial schedule is in which each and every transaction must wait for the other transaction to finish before it can begin. For example, if we have two transactions T1 and T2, and if we wish to have a serial schedule, then one scenario is that first T1 runs and finishes, and then T2 runs the transaction. Okay, and transaction obviously is a collection of related operations. But like if we have a schedule in which transactions are running one after the other, then it wastes a lot of system resources. So what we need to see is that we interleave the operations of various transactions, and if they are interleaved properly in such a way that they don't come into each other's way, then we say that the schedule is a serializable schedule. Okay, so a serializable schedule is one which is not a serial schedule but behaves like a serial schedule. Okay, and serializability is the phenomena which makes it possible. Okay, so we did discuss this thing in our previous discussion, and then we had this schedules, schedule 1, schedule 2, schedule 3, and we saw that schedule 1 is a serial schedule because in this the transaction T1 first finishes, then T2 begins and finishes. In schedule 2, we have transactions operations interleaved. Okay, transaction operations are interleaved. You can see that, and but still it is a good schedule. It behaves exactly similar to schedule 1 and gives us correct results. So this is a serializable schedule. Okay, so a serializable schedule is one which is not actually a serial schedule but behaves like a serial schedule. And the third one is a non-serializable or a non-serial schedule because in it the
operations of various transactions are interleaved and it gives us some problem. Okay, so you can see that we concurrent transactions are those in which the various operations of the transactions, they are interleaved. Okay, so it leads to certain errors. Okay, we discussed schedules in our previous discussion. Then we had this creation of the precedence graph. Then we discussed about the two-phase locking protocol, that the locks should be put in a sequence, that is in the growing phase all the locks are put, and in the shrinking phase all the locks are released. Okay, so we did discuss all these, and then we discussed that we have shared locks and exclusive locks, and then we discussed this idea about how to detect serializability. That means whether a given schedule would produce good results or not, whether it is serializable or not. And we discussed about it. The first method was the dependency graph. Okay, so you remember that we drew a graph, and if the graph had cycles in it, that means that the schedule that it represents is a non-serializable schedule, is a problematic schedule. Okay, this was what we discussed in our previous class. So that was just to bring you up to date to the previous class. And then we will discuss in general the problems related with concurrency. Okay. So what is concurrency control? First of all, the concurrency, deals basically with multiple transactions running at the same instance of time. Okay. Concurrent transaction means which are running at the same instance of time in such a way that certain part of one transaction runs, then certain part of other transaction runs, and so on. That means the operations of the transactions are interleaved. Okay. Now it deals with ensuring that two or more users do not get into each other's way. Users, by users we mean obviously in a multi-user environment, users are running transactions. So the idea is that they should not be having conflict with one another. Okay. And like if we have concurrent users and if they are just reading the data, then we don't have any problem. Okay, then we don't have any problem. But if they are updating certain items, then concurrent transactions can give us problems. One request to all of you, some of you have joined now. Okay, they are trying to join at 9:33. Okay, in my next class I won't allow this thing. Okay, there's a lot of distraction if I need to admit to your class. Okay, so kindly be in time in future, right? So you understand what is concurrency control is, that we control the transactions in such a way that they don't give us any problems. We don't have a schedule which comprises the concurrent transactions as a non-serializable schedule. Now, if they come into one another's way, okay, if two transactions or two users, they come into conflict with one another, then certain problems arise. Okay, those problems are number one, lost updates, as we saw in our previous class that one of the updates was missed. Then dirty reads, and the last one is unrepeatable reads or inconsistent analysis. Okay, lost updates, dirty reads, and unrepeatable reads or inconsistent analysis. So let's discuss about these problems, and then obviously we have found out ways to control them in shape of two-phase locking protocol, and then by detecting serializability. I'll discuss another method of discussing serializability with you today. Okay. So let's see what are lost updates. Okay, so consider that there are two users, U1 and U2, and both of them, they want to add 50 rupees to a certain bank account. Okay, so obviously what they need to do, both of them must read the balance, the current balance, and add 50 to it and then update it. Okay, so kindly see now, if you see the transactions like this, U1, 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 what is this? What type of schedule is this forming? If they are in a sequence, then this is a serial schedule, and it is not going to pose any problem to us. Okay, because first U1 would run and finish its operations, then U2 would run and finish, so they won't come into each other's way. Okay, imagine this. Yeah, somebody to update me now. Is this okay? The next schedule that you see on screen.
I hope you can see. I'm referring to this. Is it all right? Is this schedule all right? You need to respond to this. Good morning. Yes, please answer. I'm confused. देखिए easy है, इसमें क्या problem है? Only you would understand concurrency or recovery only when you understand this. हमें याद थोड़ा करना है इसको. We don't need to memorize this thing. चलिए अंकित प्रकाश. Good morning, sir. Ankit, louder. Yes, please answer. Sir, it will be all right, sir, as it is serializable. It is serializable. Okay. Those who do not agree can raise their hands. They can answer this question because I cannot move forward. Okay, Abhijit wants to answer. ठीक है. Yes, Abhijit, go ahead. सर इन दी एवअप एग्जांपल की हम बात करें तो ट्रांजैक्शन 1 तो चेंजेस द वैल्यू ऑफ एक्स की बात करें, अगर रीड बैलेंस करें और फिर वही ओवर रिटन हो रहा है अपडेट बाय अनदर ट्रांजैक्शन बैलेंस कर टू, तो यहाँ पर हमको लगता है अपडेट डन बाय जो ट्रांजैक्शन 1 होगा सर वो लॉस कर जाएगा बैलेंस कर टू बैलेंस ऑफ द सेलेक्ट की वाली फर्स्ट वाली जो है. Okay, so there is a lost update here. Very good. Okay. So see, U1 reads the balance and U2 read the balance. Both of them have read the balance. What balance they have read? I told you balance in the beginning is 1000. Okay. Then U1 updates this balance. Okay. And U2 also updates this. So both of them will update it to what? Both of them, the balance for U1 user is 1050 and for U2 also it's 1050. Can't you see that? So when they update it, the final updated balance in the account is 1050 and not 1100. Okay. Can you look at the screen now? See, you can see it. See here, U1 is read balance 1000. U2 also reads the same balance 1000. Okay. U1 updates its balance is 1050. Okay. U2 updates it, it is 1050. Now both these users have these balances in their memory, in their RAM, in their memory buffers. Okay. So when they update it, it gets updated in the database. So both of them update the same thing 1050. But we wanted them to transfer 50 rupees each. That means the account balance now should be 1100. So one of the updates has been lost. This is the problem of lost updates. Now I'm surprised that you could not pick it up, the correct answer. Okay. So this is the problem of lost updates. Remember this. Okay. Then the second is the problem of dirty reads. Okay. The problem of dirty reads. See this, assume that these assume that we have two users like U1 and U2 and they perform these operations. See, U1 updates the value of X, U2 reads that value. Okay, U2 has read the updated value and U1 does not commit the rollback or aborts his action. So whatever has been read by U2 is meaningless. Okay, this is the problem of dirty reads. Okay, fine. So here U2 reads a value that has been updated by U1. However, U1 aborts its action. Clearly, whatever has been read by U2 is meaningless. So this is known as the problem of dirty reads. You see, while we are discussing these things theoretically, in your database management system, these things are taken care of automatically. But we must understand what these problems are in concurrency control. Take up the third example now. The third error that can come is of the problem of unrepeatable reads or inconsistent analysis. So imagine now U1 reads X. After that U2 updates it, U1 again reads it. So U1 has read the value and within one update. So both these values are liable to be different. So whatever analysis U1 had to make about this on the basis of this would not be correct. Okay, so this scenario is the problem of unrepeatable reads.
Okay, so if we are clear about all these problems, you can give me a raised hand so that I can move forward. Basically, most of the times, the first two problems are problematic. Okay, rest of the class is not understood. I just see, yeah, I just see one or two hands. If you have any problems, you can ask also. I don't have any issues. But these are theoretical concepts. You must understand them. Only when then you can, work with the queries and you can work with the protocols that we are going to discuss further. Okay, thank you. You can lower your hands now. So these were the problems of concurrency control. So for that, what we did was that we detected first that we should either have a serial schedule or we should have a serializable schedule so that our transactions don't suffer from the problems of concurrency control. Okay. For that, we devised a way that we should apply a certain locking system on our transactions. So we discussed about a very harsh locking in which either we lock the item or we unlocked it. And then we discussed that locking like this would waste a lot of resources and a lot of waiting for other transactions. So we discussed about shared and exclusive locks. So shared lock would mean that if a transaction has acquired a shared lock on a data item, then all other transactions can read from it. Okay. But if a exclusive lock has been acquired by a transaction, that means the transaction wants to update that data item. So while it is updating that data item, no other transaction can come in its way. Okay. And then we discussed a schedule, if all of you remember. Yeah, this was a schedule. This was the problem that two bank accounts are there. Unke jo balance hai, they are 1,900. So we need to discuss about two transactions. One which finds the sum of these balances, okay, and the other one which transfers the amount of rupees 200 from account A to account B. तो आई रिपीट, दो बैंक अकाउंट्स हैं, एक में 1,000 रुपया है, दूसरे में 900 रुपए हैं, दो ट्रांजेक्शन हैं. एक ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट ए से 200 रुपीज ट्रांसफर करती है बैंक अकाउंट बी में. ओके, एंड द सेकेंड ट्रांजेक्शन वो क्या करती है? इट विल फाइंड द सम ऑफ द बैलेंसेस इन बोथ द अकाउंट्स. सो अब देखिए, जब ए से 200 रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे बी में, तो ए में 800 रुपए रह जाएंगे और बी में 1100 रुपए हो जाएंगे, लेकिन सम हमेशा 1900 ही रहेगा. ओके, सो T1 क्या करता है? इट इज ट्रांसफरिंग, T1 इज ट्रांसफरिंग 200 from account A to B, and T2 is finding the sum of these two accounts. तो इन दो ट्रांजैक्शंस को, अगर इनके ऑपरेशंस को हम इंटरलीव करके, मिक्स करके एक नया शेड्यूल बनाते हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक लगाते हैं. ओके, सो उसके बाद भी we saw that this transaction is problematic because ये क्या करती है कि अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो 2100 दिखाती है. तो आप लोग इसको ट्राई करके देख सकते हैं. We did try it in the last class. So we discussed that even though we have put the locks, okay, लेकिन फिर भी हमारी जो शेड्यूल है that is not serializable schedule. Then we discussed कि जो लॉक्स हैं उनको हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है. ऐसे कहीं भी शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक्स लगाने और अनलॉक नहीं करने हैं, हमें उनको प्रॉपर तरीके से लगाना है, जिसके लिए वी डिस्कस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. ओके, एंड वी डिस्कस कि लॉक्स को जब लगाना है, एक्वायर करना है, तो उसको ग्रोइंग फेज बोलते हैं. ठीक है, और जब लॉक्स को रिमूव करना है या अनलॉक करना है, उसको श्रिंकिंग फेज बोलते हैं. तो एक फेजेस में लॉकिंग करनी है, लॉकिंग अनलॉकिंग. ठीक है, and we also saw this diagram. Okay, and in this initially we acquire locks like this, and then we release locks in the shrinking phase. If we do like this, then it ensures that the schedule that we are using is a serializable schedule, right? Okay, then we discussed about this dependency graph. So if any one of you has problems with constructing this dependency graph, you can ask now. नहीं तो मुझे आपको पूछना पड़ेगा. ऑलराइट, चलिए. गौरव कुमार 153. Yes, sir. Good morning, sir. Gaurav, can you please tell us how to draw this dependency graph?
आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने बना के देखा है इसको? टेल मी ऑनेस्टली, बना के देखा है? यस और नो? No, sir. No, sir. अगर if in exam if I just give you a schedule to draw it, कर लोगे आप? कर पाओगे? Yes, sir. कैसे करोगे बताओ? अगर आपने उसको बना के देखा ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? नोट से देखोगे उसको? नहीं बनेगा वो। सर पहले नोट्स वाला तो बन जाएगा, जो ये वाला है Notes- अगर मैं यही दे दूंगा तो बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा आपसे अगर आप प्रैक्टिस Notes- नहीं करोगे तो। सो Yes, ऑल sir. ऑफ यू Notes- यू प्रैक्टिस दिस थिंग, ओके? आप वीडियो को देखो मेरे, गो टू माय चैनल, वॉच माय वीडियो, राइट? एंड Yes, sir. try to do all the things, try to see, देखिए, you try to see this also, ठीक है? कि ये जो है हमारा जो शेड्यूल है, ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? अब देखिए कि जब ये पूरा चलता है, then the balance in both the accounts would come to be 2100. Okay, like one of the students did it, I think Abhijit and Sejal, they did answer this question. So आपको इस तरह वर्क करना है so that you understand, because your aim, all of you, I would say, is not only to write the sessionals and the final exam. Your aim is to gain expertise in this databases. And you see, if your programming skills are good and your database knowledge is good, that is going to be a great scenario for all of you. और आपको लॉकडाउन में ज्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज यू सी टाइम इज पासिंग। आपका जो कैंपस प्लेसमेंट है वो तो आ ही जाना है जब भी आना है। यू शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है? सो माय रिक्वेस्ट, काइंडली वॉच ऑल दी lecture that I've uploaded on my channel. That is for you people, and all the lab sessions also. और हमारा जो अगला लैब सेशन होगा उसके अंदर आई वुड बी आस्किंग students to share their screens and tell me, you see. So you must be having Oracle installed on your laptops. Only then I'll understand that you people are working for the lab. अगर आपके पास Oracle ही नहीं है, ठीक है, तो how can you work? चलिए, इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो शेड्यूल्स सीरियलाइजेबल हैं या नहीं, या ये जो ग्राफ बनाना है, इसको एक बार जरूर आप ट्राई कीजिए, ठीक है? ओके, आई विल शेयर दिस थिंग विद यू सून, मे बी टुडे, क्योंकि आई वांट यू टू वॉच द वीडियोस फर्स्ट। आपको ये देख के याद थोड़ा करना है इसको। ये तो अभी आप जब वीडियो देखेंगे तो ये स्क्रीन यहाँ पॉज कर लीजिए, तो ये आपके सामने रूल्स दिख ही रहे हैं सारे, अब ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटोकॉल। दिस इज द टाइम स्टैम्प बेस्ड एल्गोरिथम टू डिटेक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। नाउ अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली, बिकॉज दिस इज वेरी इजी बट वेरी इफेक्टिव। Okay, so we are going to use the system clock to detect serializability. Timestamp means that in this each transaction, the moment it enters into the system, the time of the system clock is noted, okay, and then we see that how they can run so that they don't conflict with one another. Okay, so let's go ahead and just understand this thing. The basis for this technique is of imposing a linear order on the transactions. Okay, the basic idea behind timestamp based algorithm is to impose a linear order on the transactions. Okay, so the idea is that if these transactions are executed in an order, a schedule composed of these would be serial. ठीक है? तो let's assume that there are two transactions T1 and T2 such that T1 precedes T2 in the order, which means कि T1 पहले सिस्टम में एंटर हुई है, वो पहले चलना शुरू हुई है, और T2 उसके बाद चलना शुरू हुई है। I hope it's clear. Okay, then we have certain conditions which would ensure a good serial or serializable schedule. Okay, I repeat, T1 जो ट्रांजेक्शन है, लेट्स अज्यूम वो पहले चलना शुरू हुई है और T2 उसके बाद चलना शुरू हुई है, ठीक है? अब ये दोनों कैसे चलेंगी कि शेड्यूल जो है वो ठीक रहेगा, प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा? The four rules are there. Okay, let's read them. T2 can perform any operation, that is read or write, after an operation has been performed by T1. ठीक है? इसका मतलब ये हम क्या कह रहे हैं कि सीरियल की बात कर रहे हैं कि जब T1 चल चुका है, T2 उसके बाद कुछ भी कर सकता है। This is the first point, ठीक है? And then let's read the fourth point. T1 can read an item that has been read by T2. So conditions 1 and 4 are non-problematic, है ना? वो होता है कि जब ट्रांजैक्शन T1
पहले चलती है, पूरा खत्म होती है और फिर T2 चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांजैक्शन T1 जो है वो कोई डेटा आइटम को रीड कर रही है जिसको T2 पहले रीड कर चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज रीडिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन रीडिंग। ओके, then let's read the conditions second and third. They are the problematic ones. See, T1 cannot read an item that has been written upon by T2. Okay, T1 read नहीं कर सकता किसी आइटम को जिसको T2 राइट कर चुका है, okay, because T1 पहले आया था, याद रखिए, and T1 cannot write an item that has been read by T2. We must take care of these two conditions. If any of these conditions is violated, the schedule is a non-serializable schedule. I repeat, problems, these conditions 1 and 4 are okay. Okay. Only the conditions second and third are problematic. That is, the transaction T1 cannot read an item that has been written upon by T2, and T1 cannot write an item that has been read by T2. So I would urge you to take some copy pen so that you need to write something, I suppose, while I explain this thing. I'll be taking up one example so that you can understand about conditions 2 and 3. Okay. So the way to implement a non-serializable schedule detection algorithm is to stamp each transaction with the current time of the machine clock. That is, each transaction is associated with the time at which it was taken up for execution. And since the time of the clock is serially increasing, we are sure that the transactions are serially ordered. Okay? So हम क्या करते हैं, जितनी भी transactions हैं, जैसे ही वो enter करती हैं, चलना शुरू होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, उनको सिस्टम की जिस टाइम पे वो एंटर करती हैं वो टाइम स्टैम्प उनको एलोकेट कर देते हैं। सपोज T1 जो है वो 9:33 पर चलना शुरू हुई तो उसका टाइम स्टैम्प हो गया 9:33 AM। T2 जो है 9:36 पे चलना शुरू हुई, उसका टाइम स्टैम्प हो गया 9:36। It's like this. Okay. So all of you, have you understood these two conditions? I'll explain how they should be taken care of, but have you understood in the first instance that if the transactions are given timestamp of the system clock, then they must not violate conditions 2 and 3. If the conditions 2 and 3 are violated, then we have a non-serializable schedule. Okay. So after that, once we have given this timestamp, then we associate 2 marks, okay, with a data item, with a resource or a data item, whatever you call it. 2 marks, the read mark and the write mark, okay, denoted by AR and AW. Okay. So what are the values of these marks? AR is when a transaction T1 reads AR will have the timestamp of that transaction. Okay, and these 2 marks contain the timestamp of the transaction with the highest timestamp so far to have read or written into the resource. ये line को ध्यान से देखिए, how to calculate AR and AW. Okay. So let's take an example. For simplicity, I've taken the timestamps as 100 and 150. Obviously, timestamp would be the time, 9:40 AM, 10:10 AM, like this. But for simplicity, I have taken the timestamp of 2 transactions and 100 and 150. That means, let's say transaction T1, okay, it is having a timestamp of 100 and T2 is having a timestamp of 150. So which one started earlier? Tell me please, raise your hands. Which one of these started earlier, T1 or T2? Raise your hands to answer this question. See, if you don't answer, I don't see any relevance to this class. I'm sorry, I cannot continue like this. I'm not going to share any notes with you. I'll keep on explaining and I'll finish the class. You need to respond to whatever I'm asking. And you're taking too long to respond, all of you. Either you are sleeping or you're not paying attention. I'm sorry to say this. Yes, Subia, please answer. Sir, T2 has started earlier. T2 has started earlier. Okay, somebody else can answer. अगर यही मैं सुबह आपको बोलता कि T1 जो है 9:30 पे आई है और T2 जो है 9:40 पे आई तो आपका आंसर क्या होता? पहले कौन चलता है? सुबह प्लीज आंसर. Sir, T2
I repeat my question. T1 ट्रांजेक्शन 9:30 AM पे शुरू हुई और T2 ट्रांजेक्शन 9:40 AM पे शुरू हुई, तो पहले कौन शुरू हुआ? T1. तो आप T2 क्यों बोल रहे हो? उसी तरह से ये जो मैंने एग्जांपल ली है उसमें मैंने एक टाइम लिया 100 और एक लिया 150, तो पहले 100 वाली शुरू हुई है कि 150 वाली शुरू हुई है? 100 से T1. So मतलब I have taken an example. You can consider 100 as 9:30 AM and 150 as 9:40 AM. Okay, I've taken this example so that while we create this a table, to calculate the AR and AW values, it should be easier for us to understand. I could have taken 9:30 AM and 9:40 AM also. Okay, fine. So let's just have a recap. Two transactions, whenever they enter the system, clock time is given to each one of them. Okay, if there are two transactions T1 and T2, so that T1 has started earlier than T2, okay, then the conditions 2 and 3, that is, I'm reading those conditions. T1 cannot read an item that has been written upon by T2, and T1 cannot write an item that has been read by T2. These should not be violated. If these are violated, that means our schedule is non-serializable. Okay, if you have understood this thing, please give me a raised hand, all of you. And you people are not responding. I'm sorry to say, आप लोग except a few students, the rest of you are not responding. और मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका फर्स्ट सेशनल में आपका मोस्टली बच्चों के 40 to 50% मार्क्स ही आए हैं. मोस्टली का मतलब है 85 to 90% बच्चों के इतने ही मार्क्स आए हैं, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 75-80% है. Because my idea is clear with you guys. अगर आप कॉपी करके लिखते हैं, I'll evaluate you out of 50%. अब सबने कॉपी करके लिखा है. All of you have copied, have shared. अगर खुद कॉपी नहीं किया तो दूसरे को कराया. If you do like this in your sessional 2 also, I'll mark you out of 50%. So your CGPA goes down, and your responses here in the class are not good. They don't show much, enthusiasm. आप आंसर ही नहीं करना चाहते हैं. कुछ गलत ठीक तो बहुत दूर की बात है. You people are not answering. That is trouble for you. चलिए, let's see, इसको डिस्कस करते हैं आगे. So I have taken an example in which there are two transactions, T1 and T2. Now whenever I ask you something, please do respond. Okay? अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपने बताना है कि आपको समझ में आ गया कि नहीं. ठीक है? Two transactions are there with timestamps 100 and 150. So obviously जो 100 वाली timestamp है T1 जो है वो पहले चली है, और 150 वाली जो है T2 वो बाद में चली है. ठीक है? अच्छा, अब बताइए, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है? लेट्स से जो पहली ट्रांजैक्शन है T1 वो रीड करती है A को. ठीक है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AR? Raise your hands to answer this question. We have 2 marks AR, that is, अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी रिसोर्स को रीड करती है तो AR की वैल्यू उसकी टाइम स्टैम्प मिल जाती है उसको. ठीक है, साक्षी बताइए आप. सर 100. हाँ, AR is 100 बिकॉज AR को T1 ने रीड किया है, उसका टाइम स्टैम्प 100 है, तो AR 100 हो जाता है. ओके साक्षी, स्टे विद मी. ओके, देन अब सोचिए कि A को फिर सेकंड ट्रांजैक्शन फिर से रीड करती है. पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने रीड किया था, फिर सेकंड करती है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AR नाउ, साक्षी? सर 150. 150 हो जाती है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन जिसने रीड किया उसका टाइम स्टैम्प उसको मिल जाता है. ठीक है साक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन. A को फिर से T1 फिर से रीड करती है. व्हाट इज AR नाउ? सर 100. 100. Okay, Simran wants to answer this question. Yes, Simran. Simran, you can answer if you wish. Okay, Ritesh Raj can answer. Sir, it will become Sir, 150. So it stays as 150. ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या लिखा है. Let's see the rule. Yes, I have highlighted this thing for you. Okay, इसको पढ़िए.
let's T1 reads A, so AR is 100, and if A is read by the second transaction, then AR becomes 150. Again, if A is read by the first transaction, again AR remains as 150 because the transaction with the highest timestamp to have read A so far is the second one. Just understand कि AR और AW कैसे calculate करने हैं, and then we will pick up an example. ठीक है? I hope you have understood. So अब अगर देखें, अगर हमें ये AR और AW की समझ में आ गई है, तो ये जो T1 और T2 ये जो दो कंडीशंस है, देखिए जरा, इन दो कंडीशंस को AR और AW की शेप में हम स्टेट करेंगे दोबारा. ठीक है, देखिए आप अब चेक कर लीजिए, मैच करती है ये जो मैंने 2 लिखी है. T1 cannot read an item that has been written upon by T2. इसका मतलब है a transaction with the timestamp I cannot perform the read operation on a resource X if AW is greater than I. और दूसरा, a transaction with the timestamp I cannot perform the write operation on a resource X if AR is greater than I. बस आपने ये ध्यान रखना है इन दो कंडीशंस का. हमने रीस्टेट कर लिया है इनको AW और AR की शेप में. ठीक है, आपको जब शेड्यूल से एक टाइम स्टैम्प वाला एक टेबल बनाना है तो इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, ये मैंने वैल्यूज फिल करके रखी हैं. ठीक है, आप देख लीजिए जरा इसको. मैं आई जस्ट शिफ्ट इट टू न्यू पेज. प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है या. Now look at this. Look at this schedule. Now this is the final discussion about our this. There is a schedule. Can you see? T1 और T2. अब मैंने ऐसे लिखा है, आप इसका मतलब समझ गए ना. पहले T1 का इतना पोर्शन चलता है, फिर T2 का ये पोर्शन चलता है, और फिर T1 का ये पोर्शन चलता है. हमने टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल से चेक करना है कि ये प्रॉब्लमैटिक है या नहीं. तो आप लोग मेरे साथ एक एक बारी सब चीज देखिए. अब देखिए T1 जो है उसकी टाइम स्टैम्प 100 है, T2 की टाइम स्टैम्प 150 है. दैट मींस T1 जो है वो पहले चली है T2 से. ठीक है, सो रीड ए कीजिए. रीड ए. AR कितना बन गया? 100. ठीक है, A इज इक्वल टू A माइनस 100. तो AR को फर्क जो है वो सिर्फ रीड से पड़ता है ना. इस स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा उसको. ठीक है, which stays as 100. Then read B. रीड बी, मैंने दो आइटम्स लिए ए और बी. ठीक है, सो जब रीड बी किया तो BR कितना हो गया? देखिए 100. ठीक है, उसके बाद T2 ने रीड किया ए को, तो T2 की टाइम स्टैम्प 150 है, सो ये बन गया 150. कीप ऑन लुकिंग एट द वैल्यूज, बाकी किसी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, और जब T2 रीड भी करता है तो ये भी 150 हो जाता है. ठीक है, इस पॉइंट तक जहां तक मैंने हाईलाइट किया है, अगर आप सबको समझ में आ गई है तो यू कैन रेज योर हैंड्स प्लीज. अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, so that you don't have to memorize anything. नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं. You can ask please. That means all fine, right? आपको समझ में आ गया. ठीक है, फिर A is equal to A minus 100, B is equal to B plus 100. Obviously इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है. They remain the same. 150 0 150 0. अब ध्यान से देखिए, राइट A ने राइट किया तो AW कितना हो गया? देखिए चेक कीजिए. राइट A किसने किया? T2 ने. टाइम स्टैम्प कितना है? 150. ये 150 हो गया. राइट B किया T2 ने. अब ये सारे 150 हो गए. ठीक है, अब देखिए T1 ने, ये तो इसका तो कुछ असर नहीं होगा. फिर T1 ने राइट किया A को, तो AW कितना होना चाहिए? चेंज नहीं ना हो सकता, AW 150 रहेगा ना. ये हमारा क्लैश आ गया. ये स्टेटमेंट जो है, अगर इसको देखें, राइट कर रहा है T1. ठीक है, लेट्स सी. A transaction with timestamp I cannot perform the write operation on a resource if AR is greater than I. अब देखो AR greater than I है कि नहीं, चेक कर लो. ठीक है, AR यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ. AR वही था जो पहले था. ठीक है, AR is greater than I. चेक कर लीजिए, क्लैश हो गया. मैं दोबारा यहाँ दिखा रहा हूँ आपको. A transaction with the timestamp I cannot perform the write operation. तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी है जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है? ये राइट है, ये है T1. टाइम स्टैम्प कितना है? 100. ओके, तो अ ट्रांजैक्शन विद द टाइम स्टैम्प I cannot perform the write operation on a resource X if AR is greater than I. तो आप देख लीजिए AR जो है 150 है.
ठीक है, एंड इट इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्लैश हो गया। अब इसका मतलब है जो हमारा एल्गोरिथम वो क्या करेगा, इन इसको सारी चीजें जितनी भी राइट्स जो हुए हैं अभी उनको कमिट नहीं करेगा, रोल बैक कर देगा, एंड वी सी दैट दिस schedule right now is a problematic schedule, is a non serializable schedule, okay। तो इसको पढ़ के समझ के आप इजीली इसको कर लेंगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड टू वेरी गुड मेथड्स टू डिटेक्ट serializability. One is the timestamps based algorithm and the other one is the drawing of the this dependency graph, okay। And when we construct the graph related to this schedule, if it has cycles in it, that means this schedule is non-serializable, okay। So if all of you have understood for the first time, you see, I don't say that you understood fully, क्योंकि आप एक दो बार इसको देखेंगे, वीडियो को एक दो बार करके देखेंगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ अ रियल एग्जाम, यू सी, नॉट आवर सेशनल्स, ठीक है। आपको कोई आगे अच्छे एग्जाम्स देने हैं, अच्छे इंटरव्यूज देनी है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सो काइंडली वॉच दिस अगेन। मैं आपको अगर अपने वीडियोस की दिखाऊं व्यूअरशिप पुराने स्टूडेंट्स की, वो मेरे चैनल पे है, इट इज इन हंड्रेड्स, 700, कुछ वीडियोस तो थाउजेंड्स में भी हैं। आप लोग यू आर नॉट वाचिंग वीडियोस, आई डोंट नो आप लोग सारा दिन क्या करते हैं, बट आप लोग वीडियोस देखिए, सभी सब्जेक्ट्स की जो भी टीचर्स डाल रहे हैं आप देखिए उसको, और उससे कुछ अपने जो कंसेप्ट्स है कुछ लिखिए, कुछ नोट्स बनाइए। जस्ट डोंट रिलाई अपॉन गूगल। गूगल इज वंस यू हैव डेवलप्ड सम स्किल और आपको एडिशनल हेल्प चाहिए, आपको हर चीज के लिए गूगल नहीं चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। let's take okay, let's now discuss a concept known as log granularity. Tamanna, if you need to ask something, or you just raise hand just like that. All right, fine, thank you. Log granularity is, you know, the level of locking that you put on your database or on the transaction or some field. Okay, so there are different levels of locking granularity, right? So what is this granularity? The size of the data item that you have chosen as the unit of protection, okay? The size of the data item that you have chosen as the unit of protection by a concurrency control program, that is termed as granularity. That means, like, if you are doing some updation, okay, and the transaction, what it locks, okay, what the transaction is locking, okay. Yes, Snail. Sir? Yes, Snail, go ahead, ask. Sir, I have my vaccination slot today. Can I go? I'm not able to hear you. Come again. Sir, I have my vaccination slot today. Okay. So may I leave the class, sir? Yeah, no problem, no problem. You are a regular student, no problems. Go ahead. All the best. Have a good vaccination. Thanks. Okay. So if some transaction is writing some data item, then obviously it requires an exclusive lock on it. Now, what it locks, whether it locks that particular field, the column, or whether it locks that row, or whether it locks the entire table, or whether it locks all the tables in the database, that is known as granularity. Okay. So a granule is, see, a granule is a unit of data individually controlled by the concurrency control subsystem. So we can have these levels. Either while we are updating, while the lock is acquired, it could be locked at the database level, the table level, the page level. Okay, page level is the buffer that data item is using. That entire buffer is locked. No transaction can read from that buffer. And then if the row level is there and the attribute of the field level is there. So let's discuss them one by one. I'll ask you questions wherever required. So at the database level locking, the entire database is locked. What do you think about this? Let's ask Aditya Ranjan. Aditya, is it a good way that we should use database level locking? Is it good? Aditya, unmute yourself, please. Hello. Good morning, Yes, sir. Aditya. आवाज आ रही है सर मेरी?
कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। हेलो हेलो हेलो। आवाज ना आने का मतलब है कि आप अच्छे हेडफोन्स यूज नहीं कर रहे हैं, मेरे को तो ऐसे ही लगता है, या हो हेलो। सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो। चलिए अब रहने दीजिए, कोई बात नहीं। लेट्स आस्क अनुज वर्मा। अनुज आप देखिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, देखिए आपकी आवाज आती है कि नहीं। अनुज वर्मा आप हैं कि नहीं क्लास में? मैं ऐसे ही आपको ट्राई कर रहा हूँ ज्वाइन करवाने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे ही ऑन करके बस छोड़ देते हैं कि ठीक है सर ने पढ़ाई देना है, हमें हमें सब कुछ आ जाएगा अपने आप ही। यस, ऋषिकेश पाटिल, देखें पाटिल जी हैं कि नहीं। यस सर। यस ऋषिकेश, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ऋषिकेश, डेटाबेस को लॉक लगा दे। डेटाबेस का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट जो है उसकी उसके डेटाबेस है, दैट मींस कि उसमें स्टूडेंट टेबल भी है, फी टेबल भी है, गेम्स का टेबल भी है। सो डेटाबेस लेवल लॉकिंग मतलब है कि अगर हम स्टूडेंट टेबल में कुछ डील कर रहे हैं तो सभी टेबल्स को, पूरे डेटाबेस को लॉक कर दें। इज दिस टाइप ऑफ लॉकिंग गुड और नॉट? Sir, as you said, it is slow process, right? Okay. So it would So be very, very, it would make all the transactions to wait to acquire the various resources. So database yes, level locking is too restrictive. Okay. yes, sir. So it is used only when you have large number of tasks to be done. Okay. So Yes, sir. it is normally not used. Okay. Yes. Then table level locking means that if you are using, say, from the M table, if you are trying to do some updations on E name, let's suppose, okay, then you will lock the entire table so that if some transaction wants to use the salary attribute, वो भी नहीं कर पाएगा. So even table level locking is restrictive. Then we have page level. Okay, so page level is like you see the disk buffers are of sizes 4K, 8K in multiples of 4K. Okay, so एक table जो है it could be in many memory pages. Okay, so अगर हम पेज लेवल पे भी लॉक लगाते हैं तो वो भी रिस्ट्रिक्टिव है. लेकिन अगर आप बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं तो इस तरह की लॉकिंग it could be good for certain tasks. Okay, but the best one that you see is, okay, are the two, row level and attribute level. Okay, कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज को अपडेट कर रहे हैं से एंड इट अफेक्ट्स 3 रोज, तो उन 3 रोज को हम लॉक लगा देते हैं और बाकी की जो रोज हैं वो एक्सेसिबल होती है सभी ट्रांजैक्शंस को. और जो बेस्ट है दैट इज द एट्रीब्यूट और द फील्ड लेवल लॉकिंग, कि अगर हम रोल नंबर पे कुछ काम कर रहे हैं तो रोल नंबर जो फील्ड है उसको ना तो कोई और ट्रांजैक्शन पढ़ सकती है ना उस पर कुछ चेंजेस कर सकती है. सो दीज आर दी ग्रैन्युअल्स, द ग्रैन्युलैरिटी. ओके, दिस इज automatically done by the database management system. You just need to write some commands to work on it. I cannot show you here on MySQL because we need a multi-user system like we had initially in our lab when we used Oracle 9i, in which there is a server and clients. So on a single system, I cannot show this log granularity to you. All right. This was regarding log granularity. Then I've written again here log types. Binary locking, you understand? The first one that we discussed, either we lock the item or we unlock it. Okay, this is too restrictive. Then exclusive locking and shared locking, you know. Okay, exclusive locking means that if some data item is exclusively locked by some transaction, then no other transaction can read or write into it. And shared locking means anybody can read an item which has been shared locked by a transaction. And then how to put these two, lock and unlock, we discussed the two-phase locking protocol. So this is the end of this part. Okay, let's now move to the an easier topic, an interesting topic, which I think you people might participate with me. Participate as per my desire. I want you to speak, but you speak less. Okay, next is the database security. इस पे तो डिस्कशन कर सकते हैं. इसमें तो आप सब एक्सपर्ट हैं, घर पे आपने पासवर्ड्स लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ है ना, अपनी पेन ड्राइव आप एक्सेस नहीं किसी को करने देंगे, ऐसा करते हैं ना आप लोग. इफ यू आर वेरी मच concerned about your data so that nobody else can see it. Okay, if you are concerned of, you raise your hands so that we can start a discussion. The topic is interesting.
Let's see. Raise your hands if you are concerned कि आपको लगता है कोई नहीं, मेरा लैपटॉप कोई भी देख ले, मेरा फोन कोई भी देख ले, ऐसा नहीं ना होता. All of you are concerned. So that is what security is. Now, same is the case with the databases. Databases, they contain very confidential information in it. Like for some company, say ABC company, if they have a database, obviously they would not like to share it with all. They would give its access to certain specified people, right? So the first line is very interesting. See, database security has to do with ensuring that only the right people get the right access to the right data. Okay. So who are the right people? Raise your hands. Who are the right people? Yeah, raise your hands to answer this question. Yeah, keep on raising hands. I'll ask. Okay. Yes, Prince. The right people is who like who make the password enable or like the security enable to the system. Okay, that's okay. All right. I'll do one thing. I'll unmute or all whoever of you. whoever I'm unmuting all of you. So, ठीक है, Simran आप बोलिए. Now you are unmuted. You can speak. Yes, Simran. Sejal, you can speak. Sir, the right people are those with whom the company wants to share their data. That's true. That's true. With whom the company wants to share, with with the people the company trusts them. Okay, so they are the right people. And the second thing, and the first thing, right people means that we authenticate people. We pick up people who would be using the database, reading the database, modifying the database, and so on. Okay. And the second problem is right access to right data. What is that? Anybody can speak? Right access to right data. That means, okay. Yes, Sejal. Sir, everyone, like the few people have access to the they have the limited access, then some group of people might have the larger access. True. That means, like, say for example, in a company there are 5 people who are very much trusted, honest, sincere, right? So out of those 5, the company can pick up 2 people who can do everything with the data, and the remaining 3 who can do partial things with the data. So access means access to what extent, okay, and access to what data. What data means whether entire database they can see, partial database they can see, and the right access is whether they can read it, whether they can update it, whether they can remove it, and so on. Okay, fine. So how can we implement this thing? Somebody can answer this. How can we implement this? The things that we have discussed. Authentication तो हम कर लेंगे. Authorization कैसे करते हैं? How do we pick up this authorization? I think you can answer this question. आपने कुछ दिन पहले views पढ़े थे. With privileges and grants. Yeah, with privileges and grants, and by creating views. Somebody was going to answer. Somebody unmuted. अभी किसी ने unmute किया था, बोल दीजिए जिसने भी किया था. I couldn't see it on screen. Yeah, Prince, yes, go ahead. Prince, you can speak. Yeah. My answer was same as of Sejal. Yeah, so we can give authorizations. Okay, we can give privileges, we can grant privileges, we can revoke privileges. Okay, then privileges we can give read privilege, write privilege. So we call it the read authorization, write authorization, update authorization, insert authorization, delete authorization, and so on. You know the command for it. Grant and revoke are the commands. And then what part of the database is to be shown to the people, that we can do with the help of views. We have already seen that if a table contains multiple columns,
you can create a view out of it and you can share it with the people who can view that. And people would think that the table contains that much information only, whereas the table is containing a larger information. Okay, so this is one thing about security. अब एक मुझे बात बताइए, what are the various threats to the database? What are the various security threats? Let's discuss this question. This important question कि किसी database को क्या क्या threat हो सकते हैं security के कि हम उसकी security करें. This many people can answer, I think. You just raise your hand and speak. Yes, Rushikesh Patil, you raised hand, you can speak. I have unmuted Sir, you, you can, yeah. Yes, Go sir. ahead. Data breach problems can occur. Like, yeah, go ahead. What problems can occur? Data breach, sir. Anyone can breach your data or Data hamper breach. the data. That's true. That's true. Very good point. Data breach. Okay, fine. चलिए आगे प्रिंस बोलिए. Sir, anyone can change my data without giving acknowledgement of it, or they can delete it. Any alteration can be done without the Okay, fine. चलिए acknowledgement. अभिजीत आप बोलिए. Sir, ठीक है. Good. excessive privilege, sir. Excessive privilege. When I can't. Your voice is not clear, Abhijit. so excessive privilege, sir. Excessive privilege. Okay, चलिए ठीक है. मैं डिस्कस करता हूँ उस पे. सिमरन आप बोलिए. Friends, you can lower your hand. Simran, you've raised hand here. Sir, eavesdropping can be there. I don't know. Your voice is not clear. Like Simran, anyone can Abhijit. see or access our data Anyone without can. the Okay. permission. The privacy concern may be violated due to this, like some data which is expected to be in private, which is that can Obviously when security breach is there, problems are there. Okay, so good answers from all of you. You can mute yourself now, all of you. Listen to me now. So if we just categorize this thing, okay, one thing is data tampering. Okay, data tampering is like when data is traveling from one site to another, from one network to another, people can tap and pick up the information without you knowing it. That is why you see when you use WhatsApp, they say that this is end-to-end encrypted. Okay, I'll discuss encryption with you as my next topic today. So they say all these chats and video are end-to-end encrypted. Nobody else, without the sender and the receiver, nobody else can see it, not even WhatsApp. I think आप लोग ये privacy पढ़ते हैं कि नहीं WhatsApp में, है ना? तो वो क्या होता है कि अगर आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन अच्छी नहीं है, देन कोई भी बीच में से आपके डेटा को ब्रीच कर सकता है. दिस इज नोन एज डेटा टैम्परिंग. Yeah, Simran, you want to speak something? नहीं तो म्यूट कर लीजिए सिमरन अपने आप को. हाँ जी बोलिए बोलिए. Sir, the threat that is denial of service can also be applied here. नहीं वो कुछ और होता है. Denial of service is not a threat actually. Okay. Threat is that your data, without your permission, somebody else is trying to copy, trying to steal, trying to delete, trying to update. That is exactly a database threat, right? Okay. Then we can have eavesdropping and data theft. Eavesdropping, EAVES dropping. Eavesdropping होता है कि हम छुप के किसी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, छुप के किसी का पासवर्ड देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इस तरह से हम उनका जो डेटा है वो स्टील कर सकते हैं. या फिर हम किसी का यूजर नेम पासवर्ड पिक करके और फिर उसकी आइडेंटिटी लेकर हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपका पासवर्ड जो है आपने अगर ठीक से नहीं दिया है, इवन देन दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक. पीपल कैन गेस योर पासवर्ड कि आप किसी एक स्टैंडर्ड पासवर्ड रखेंगे या आपने डेट ऑफ बर्थ पे रखेंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. एंड देन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा इज आल्सो अ थ्रेट. यू सी इफ सम privileges have not been granted to people, okay, then they can take somebody else username password and can do some problem with the data. So we need to make people accountable for it. That is why this first line is very important that you see on screen, that it has to ensure that only the right people get the right access to the right data.
So how do you pick up the right people? Kindly read now in authentication. Okay. So अब देखिए, over the years authentication methods have changed. Okay. So initially, you know, we had this magnetic film batch. अगर आपने अभी भी English movies में देखे हैं आप, ठीक है ना, एक magnetic pattern बना होता है, एक batch होता है, तो वो उस batch को जब insert करते हैं तो it matches with the already existing pattern, and then if the patterns match, the resource can open. Okay. Then there are more better methods of authentication, like fingerprints are there, retina scans are there, okay, the palm scanners are there, so many are there. So all these are there to authenticate that the right people have the right access. Okay. And then there is also a model. I just picked it up, I found it good, so I share it with you. This is a model for access control, okay, which is known as the Lamson model. Okay. So this Lamson model makes a matrix out of these three things: subjects, objects, and access rights. Can somebody tell me what is the subjects, what is the objects, what is the access rights? Anyone can tell me about this? What are these three things? Subjects, objects, and access rights. Okay, I'll discuss with you. Subjects are the various users of the database. Okay. Objects are the various data items. And access rights is whether the person can read or write it. Okay. So based on these three things, we'll create a matrix. See, a very short example I've taken. In an organization, let's say there is a clerk, there is a personnel manager, there is a senior manager. Okay. And three data items are there: e-name, salary, and leave. So clerk can just read e-names. Personnel manager can read e-name, something like this. Senior manager is the more trusted person. He can read or write this. He can read or write this. Maybe the accounts manager can have a read write on salary, something like this. Okay. So this is a small model for securing things. Okay. Then we have discussed this. Now let's discuss importantly the data encryption. I'll just touch the basics because I think you already might have done with some algorithms like RSA and all in your networks, I suppose. Am I right? You must have learned about some algorithms. Have you understood the RSA algorithm? If yes, you can raise hands. RSA algorithm, have you gone through? Only one person? Sejal, आपने ही पढ़ा है सिर्फ, बाकी सबने नहीं पढ़ा क्या RSA algorithm? Yes, Sejal, speak. Sir, I have done a project on RSA algorithm. So you have not studied it in your networks? Okay. Not yet. Okay, fine. चलिए, डेटा इंक्रिप्शन तो आप सबको पता ही है. इंक्रिप्शन क्या होता है कि अगर हमने कुछ सेंड करना है सेंडर साइड से, तो उसको कोई बीच में अगर देखे भी तो उसको समझना है. इट शुड बी इंक्रिप्टेड यूजिंग सम कोड. ठीक है. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कन्वेंशनल इंक्रिप्शन है उसमें हमारे पास जब हमको मैसेज भेजना होता है तो जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट. ऋषिकेश, you want to speak? You can speak. Yes, sir, I wanted to answer regarding RSA. Okay, go ahead. So RSA is generally used to encrypt and decrypt data using security keys or any code. That's what I want to say. Yeah, true. We'll discuss that. We'll just discuss a part of it. यहाँ पर भी हम कुछ एक encryption technique use करेंगे. पहले simple और फिर थोड़ी सी complex. ठीक है. सो जो हमारी कन्वेंशनल इंक्रिप्शन है उसमें क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल मैसेज है जो हमने भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट. ठीक है. फिर हम कोई एक एल्गोरिथम लेते हैं जिसको इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बोलते हैं, जिसके थ्रू उसको हम क्या करते हैं, उसको जंबल कर देते हैं प्लेन टेक्स्ट को. ठीक है. जिसको कि हम क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट. ठीक है. जो हमारा स्क्रैम्बल्ड मैसेज होता है ना, एक हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है, उसको हम चेंज करते हैं ताकि बीच में अगर कोई पढ़े भी तो उसको समझ ना आए. उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट या सिफर टेक्स्ट. ओके. एंड देन उसके साथ एक की को भी एसोसिएट करते हैं, सीक्रेट की को, कि जिसको की पता है वही उसको डिसाइफर कर सके या पढ़ सके. और वो की यूजुअली जो रिसीवर होता है उसके पास होती है.
ठीक है। जैसे कि आप देखिए ओरिजिनल फ्रेज है डेटाबेस मैनेजमेंट, है ना। तो हमने इसको क्या किया, जो पोजीशंस हैं वो रिलेटिव पोजीशंस आगे पीछे कर दी। देखिए ए और डी को इंटरचेंज कर दिया, टी और ए को इंटरचेंज कर दिया एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये हमारा ओरिजिनल फ्रेज जो डेटाबेस ये है, इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। जो हमारा स्क्रैम्बल्ड मैसेज है उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, ठीक है। उसी तरह डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में क्या होता है कि ये देखिए पहले जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो एनक्रिप्ट होके बनता है साइफर टेक्स्ट, ठीक है, और फिर डिक्रिप्ट होके वापस प्लेन टेक्स्ट बनता है। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। सो आप देखिए कौन सी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं एनक्रिप्शन के लिए। एक तो है ट्रांसपोजिशन साइफर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल रिलेशन है उससे सिर्फ पोजीशंस उसकी चेंज कर देते हैं। वी जस्ट ट्रांसपोज द पोजीशंस ऑफ द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर्स, ओके। फिर एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारे उनकी जो, जैसे ई की जगह हम क्या कर देते हैं एच, देखिए ई की जगह क्या किया, एफ जी छोड़कर एच कर दिया, राइट। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, वर्ड है इंक्रिप्शन, तो ई की जगह क्या कर देते हैं एच, एफ और जी छोड़कर। उसी तरह एन में क्या करते हैं ओ और पी छोड़कर क्यू। तो ये हमने क्या किया, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन साइफर, ओके। और जो ट्रांसपोजिशन साइफर होता है वो सिर्फ करते हैं हम पोजीशन जो है उसकी आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। देन देयर इज समथिंग नोन एज अ डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ओके। सो ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, हम ऐसे कोई ट्रांसपोजिशन यूज कर रहा है, कोई ऐसे यूज कर रहा है, तो उसपे हमारे पास एक आती है पब्लिक की इंक्रिप्शन, ओके। सो ये जो टेक्निक है दिस वाज प्रपोज्ड बाय डिफी एंड हॉलमैन इन 1976। तो इसके अंदर जो एल्गोरिथम्स आते हैं उसमें क्या होता है, एक प्लेन टेक्स्ट होता है, एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की भी होती है, ठीक है। सो जो जिसके पास वो प्राइवेट की होती है वो ही डिक्रिप्ट कर सकता है अपने उसको प्लेन टेक्स्ट को वापस मतलब कर सकता है। तो ये इस पे ये एल्गोरिथम दिया हुआ है। और यहाँ पर जो एक एग्जांपल मैंने शुरू में दी थी कि वी यूज दिस आरएसए एल्गोरिथम एज एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। कि किस तरह से वर्क करता है आप देख लीजिए। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट व्यू पॉइंट बिकॉज वी डोंट नीड टू लर्न अबाउट इट। आप नेटवर्क्स में शायद इसको पढ़ लेंगे या आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये है हमारे इंक्रिप्शन का, ये हमने सिक्योरिटी की कुछ बात की है यहाँ पर, ठीक है। So I've just touched the security, इसमें इतना कुछ वो नहीं है। You should be just aware of what are the threats, how to take care of those threats, how to authorize people, how to authenticate people, what are the things which authenticate, the retina scanners, the fingerprint scanners, okay, like this. Let's now move to the next topic. अगर आपको कुछ पूछना है तो you can raise hands. So we just finished this log granularity. Okay. Let's now study this topic, recovery. Okay. शुरू कर देते हैं आज. All right. अच्छा एक बात बताइए, do we have a lab today? ये मुझे बताइए जरा. Yes sir. Yes sir. साक्षी, विजीत, ओके। तो ऊंचा जिसकी आवाज मुझे क्लियर आ जाए, दूर दूर से आवाज आ रही है. Yes sir. साक्षी बताइए. Yes sir. कितने बजे है लैब? 11:30. ओके, अभी क्या टाइम हुआ है? Because I scheduled a few classes today, I need to go somewhere later in the weekend. All right, ठीक है. तो अभी थोड़ी देर और क्लास पढ़ लेते हैं. 11:45 पे लैब कर लेंगे. 11:40 पे आप लोग अवेलेबल रहिए सब, मैं मैसेज डाल दूंगा. I'll have a lab session with you also. ठीक है? Around 11:40. Okay? चलिए. So let's just discuss this for 10 minutes. आप लोग सब unmuted हैं. You can give your inputs. Recovery, when we start discussing, you understand that some failure has occurred. Okay, there is some problem with the consistency of our database. So now we need to recover so that we can have our original database. It is similar to like कि आपके पास कुछ important files हैं, ठीक है, जिनको कि आप अपने लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं और साथ में आप उसका बैकअप जो है अपनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क पे भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप रिकवर करने की कोशिश करते हैं डेटा, है ना, रिकवर करते हैं। तो रिकवरी कैसे हो सकती है कि यू फाइंड द लास्ट गुड डेटा दैट यू हैड, क्योंकि उसके बाद भी कुछ चेंजेस हो गए जो कि विच आर लॉस्ट. ओके, सो रिकवरी इज द सेम इन केस ऑफ
in case of databases, right? So let's read. When a database does not satisfy consistency requirements, it has to be brought into a consistency state. Okay. So when we have some problems, तो हमारा database है वो consistent नहीं रहा, तो उसको consistent state में लाना है. This is known as recovery. Okay. So किस तरह की problems हो सकती हैं कि अगर हमारे कुछ integrity constraints violate हो गए हैं या हमारा कुछ system में कुछ problem आ गई है, तो then we must recover our data. Okay, so we must not leave our database in an inconsistent state. Okay, so let's first discuss what type of failures can occur which may prompt us for recovery. Okay, so the different kinds of failures you see, the three broad categories are: we could have a failure of a statement, we could have failure of a program, we could have failure of the system. So let me elaborate each one of these. Failure of a statement. ठीक है, आपने अपने ट्रांजैक्शन है उसके अंदर आपने बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं. अगर उसमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो फेल हो जाती है, मे बी इट इज वायलेटिंग सम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, और मे बी इट इज नॉट अलाउड टू रन, you know, maybe it cannot update because the privilege is not there. Okay, like you are trying to update some table, okay, but the privilege is not there, then that statement is bound to fail. So what happens when the statement fails? The entire, you know, your atomicity would come in, and if one statement in a transaction is not running, then all must be rolled back, you know? So a failure of a statement can be there. So what is the remedy for that? If somebody asks you कि failure of statement नहीं होना चाहिए, then we can be very careful about writing the statements. So now second is failure of program. वो कब होता है कि आपका प्रोग्राम ही चलना बंद हो गया, या प्रोग्राम आपका जो है वो जो है चल नहीं रहा है, या एक इनफाइनाइट लूप में चला गया. मोस्ट कॉमन फेलियर ऑफ प्रोग्राम्स इज व्हेन योर प्रोग्राम गोज इनटू एन इनफाइनाइट लूप. ठीक है, सो व्हाटएवर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हैज रन, इट मस्ट बी रोल्ड बैक. ओके, एंड देन द फेलियर ऑफ द सिस्टम, कि आपका सिस्टम चलते चलते हैंग हो गया, आपकी जो पावर सप्लाई है सिस्टम की खराब हो गई है, या आपका जो नेटवर्क है वो ही नहीं चल रहा है. ओके, सो फेलियर ऑफ द स्टेटमेंट में तो यही है कि आप जो केयरफुली कोडिंग करें, अपने कमांड्स केयरफुली लिखें. फेलियर ऑफ प्रोग्राम को चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आपने कोई ऐसा लूप यूज कर लिया है कि जो आपको इनफाइनाइट लूप में ले गया है, उसका कोई इलाज नहीं होता है. ठीक है, और फेलियर ऑफ द सिस्टम में क्या है कि आप अच्छी इक्विपमेंट यूज करें, ठीक है, और अपना जो यूपीएस है वो रखें, सो दैट अगर आपका सिस्टम पावर भी चली जाती है तो आपका सिस्टम जो है बंद ना हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ what are the different kinds of failures and how you can take care of them. ठीक है, how you can control them, that I have discussed with you. ठीक है, जैसे अगर आपकी स्टेटमेंट कोई फेल हो रही है तो आपने जो चेक्स लगाए हैं इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वो ध्यान में रखिए, कि जैसे सैलरी है, मे बी द कंडीशन इज कि सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000. व्हेनेवर यू एंटर समथिंग द सैलरी वुड नॉट बी लेस देन 5000. आपने सैलरी ऐड करने की कोशिश की एक स्टेटमेंट में कि इंसर्ट की सैलरी 4000, तो कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाए, वो चलेगा ही नहीं. And we must check all the conditions before we can actually start our transaction, because once the transaction starts, either it must run successfully, or if some part of it runs, then it would be rolled back. Okay, so next is recovery techniques. I think this I'll discuss in my next class. I'll give you people some break, and then we will have a lab session at 11:40. Okay, if anything needs to be asked, तो आप पूछ सकते हैं अभी. Otherwise, I'm going to close this class. Thank you.